Hello students, the question is, a proton is taken from point P1 to point P2, both located in an electric field. The potentials at points P1 and P2 are minus 5 volt and plus 5 volt respectively. Assuming that kinetic energies of the proton at points P1 and P2 are 0, the work done on the proton is option A minus 1.6 into 10 raised to the power minus 18 joules, option B 1.6 into 10 raised to the power minus 18 joule, option C 0, and option D 0.8 into 10 raised to the power minus 18 joule. So the problem is based upon the topic electrostatic potential, and in particular the work done by moving a charge from one point to another point having certain potentials. So we know the concept here is, suppose there is a point P1 and a point P2, and the charge at point P1 is, the charge is taken from point P1 to P2, and the potential at point P1 is suppose V1 and potential at point P2 is suppose V2. Then the work done in moving this charge from P1 to P2 is given by W equals to Q V2 minus V1. So this is the basic formula which we have to use here. That is Q multiplied by bracket the final potential, that is the final position's potential, minus the initial position's potential. So this comes out to be Q is basically the charge of proton, which is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulombs, and V2 is here is given as plus 5 volt, and V1 here is given as minus 5 volt. So we can write here as plus 5 volt minus minus 5 volt. So in this way we get this value as 1.6 into 10 to the power minus 19 multiplied by 10. So this comes out to be 1.6 into 10 raised to the power minus 18 joules. So this is the total work done in moving this particular charge from point P1 to point P2. So you can say that option A is correct here. Option A is the correct option, that the work done is 1.6 into 10 raised to the power minus 18 joules. This is the positive work done. Now this is the answer, and we can check it by our analytical thinking also, that proton is a positively charged particle, and when it is moving from a negative potential to a positive potential, this positive potential try to repel it in the opposite direction. So it means that a positive work has to be done by the external agency. So we have to use our analytical thinking also, that our answer is correct here. The positive answer is correct here. The positive value is correct here, because when a positive charge is moving from a negative potential to a positive potential, or a lower potential to a higher potential, then there is a repulsive force in the opposite direction. So to overcome this force, a positive work has to be done. So the external agency has to do a positive work to move this particular proton from point P1 to P2. So in this way we can confirm our answer also. तो यहाँ पे कहा गया है कि एक प्रोटॉन है, उसको पॉइंट P1 से P2 पे ले जाया गया है, और ये दोनों ही पॉइंट एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लोकेटेड है, और इनके पोटेंशियल दिए हैं रेस्पेक्टिवली। P1 का पोटेंशियल दिया हुआ है माइनस 5 वोल्ट, और P2 का पोटेंशियल दिया हुआ है प्लस 5 वोल्ट। ये माना गया है कि काइनेटिक एनर्जीज इन दोनों पॉइंट्स पे इस पर्टिकुलर चार्ज की जो है वो क्या है, यानी प्रोटॉन की क्या है, जीरो है। हमें बताना है कि कितना वर्क किया जाएगा प्रोटॉन को P1 से P2 तक ले जाने में। तो यहाँ जो कंसेप्ट यूज किया गया है वो यूज किया गया है फ्रॉम द टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और पर्टिकुलरली ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जाना है कि वर्क डन बराबर चार्ज मल्टीप्लाई बाय द चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज द फाइनल पोटेंशियल माइनस द इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल P2 पॉइंट का प्लस 5 वोल्ट है, और इनिशियल पोटेंशियल P1 पॉइंट पे माइनस 5 है। इसे हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, और यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट करने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18 जूल्स। तो ये टोटल वर्क डन होगा प्रोटॉन को P1 से P2 तक ले जाने में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन बी में हमारा पॉजिटिव आंसर है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव का 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18 जूल्स के बराबर होगा। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।